ट्रिग्नोमेट्री, ये सेशन 5 है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक identities. So we have to prove trigonometric identities. First we make a right angle triangle, right angle at B. This is A, this is C. I will take angle A. We know that in right angle triangle ABC we will use Pythagoras theorem. This is hypotenuse, this is perpendicular, and this angle के सामने perpendicular, and this is base. Now what is, we know that Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equal to AC square. Now divide the equation by AC square on both sides. So we get AB square upon AC square plus BC square upon AC square is equal to AC square upon AC square. This will cut and gives the value 1. Now AB square upon AC square, what is AB? AB is, here you can see that AB is base. It is base upon AC is hypotenuse. This is base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse क्या होता है? Cos A. You know that cos A is base upon hypotenuse and sin A is P upon H. Now putting the values, this is cos square A, then BC upon AC, that is sin square A, और ये कट के क्या हो गया? 1. So this is the identity, trigonometric identity. From this you can make another identities. You know that cos square A, sin square को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 1 minus sin square A. Taking square root you will get under root 1 minus sin square A. Now अब क्या करेंगे? sin को उधर ले जाएंगे और cos, sin को इधर रखेंगे और cos को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 minus cos square A. Taking square root you will get under root 1 minus cos A. Now अब किससे डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन 1 को? अभी AC स्क्वायर से डिवाइड किया था. दिस इज वन आइडेंटिटी, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, cos स्क्वायर A plus sin स्क्वायर A is equal to 1. Now I find out other identity. There are three sides, one by one we divide by each sides. So here now divide the equation by BC square on both sides. इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. नाउ AB अपॉन BC, व्हाट इज AB? AB is base and BC is perpendicular. It is BC is perpendicular. So if BC is perpendicular, तो base upon perpendicular क्या होता है? Base upon perpendicular, it is cot theta. It is cot A. So you can write cot A square. Now BC upon AC, what is BC? BC is perpendicular and BC तो कट जाएगा. This will gives out 1. And what is AC square? AC is hypotenuse and BC is perpendicular. H upon P क्या होता है? Cosec. तो cosec is equal to cosec square A. Now this is the identity, cosec square A plus cot square A is 1. Or you can write in this way, cosec square, इसको तो ले जाइए, cosec square A minus cot square A is equal to 1. Or you can say, if you take, or you can write cosec A, square root ले लीजिए इस पे, तो क्या हो जाएगा? under root 1 plus cot square A. Now what is cot square A? Cot square A क्या होगा? अगर 1 को उधर ले गए
If you transpose one there, cot square a, cot स्क्वायर ए को आप इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर ए, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले, cosec स्क्वायर ए माइनस 1, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो cot ए क्या हो जाएगा अंडर रूट cosec स्क्वायर ए माइनस 1। नाउ अपन ने किससे डिवाइड कर दिया, AC से डिवाइड कर दिया, BC से डिवाइड कर दिया। नाउ वी विल डिवाइड द इक्वेशन बाय AB। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या आई, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। नाउ डिवाइड द इक्वेशन, now divide the equation by AB square on both sides. So you can write AB square upon AB square plus BC square upon AB square is equal to AC square upon AB square. Now you see that this will cut and gives 1 plus. Now BC upon AB. BC is what? BC is perpendicular and AB is base. So P upon B is tan A. So this becomes tan square A, and AC is hypotenuse and AB is base. H upon B is, what is H upon B? It is sec. B upon H cos होता है, उसका रिवर्स कर देंगे तो sec is equal to sec square A. This is another identity. 1 plus tan square A is sec square A, or you can say that sec square A minus tan square A is equal to 1. If you take square root on this, you will get sec A is equal to under root 1 plus tan square A, और क्या हो जाएगा sec हो गया, अब tan क्या हो जाएगा, tan square A is equal to sec square A minus 1, और tan का स्क्वायर रूट करेंगे तो tan A हो जाएगा, और ये अंडर रूट sec square A minus 1। So third identity क्या आई आपकी, sec square A minus tan square A is equal to 1. So these, we can use these three identities and solve the questions of trigonometric identity.